Welcome back, students. In this video we will continue our gamma distribution, in which we will do the additive property of two gamma variates. Okay, I will show you the addition property for two gamma variates and then we can generalize that result. Okay, तो firstly मैंने two gamma variates assume किए. Let x1 and x2 be two gamma variates. इफ़ आई एम हैविंग टू गामा वेरिएट्स तो हम इस एडिटिव प्रॉपर्टी को वी विल शो बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF फंक्शन. ओके, तो वहाँ पे इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू कि mx1t विल कम 1 अपॉन में 1 माइनस t लैम्डा 1. देखो x1 के लिए पैरामीटर आई एम टेकिंग लैम्डा 1 एंड फॉर x2 आई विल टेक पैरामीटर लैम्डा 2. तो फॉर x2 वेरिएबल what will be your MGF? 1 upon में 1 minus t lambda 2. ये आ गया वेरिएबल. ओके, now sum of x1 plus x2 t. now sum of this addition property मतलब sum of these two random variates. तो इनके sum के लिए I will take help from the MGF function. This will be equal to expectation of e की t x1 plus x2, open the bracket. And one more thing, addition or subtraction property. Under any distribution I can show only if those variates are independent. If they are not independent तो हम expected value में उनको separate नहीं कर पाएंगे. Okay, so the most important condition for this is कि the variates should be independent of each other. e की t x1 plus t x2. तो it will be expectation of e की t x1 t x2 by the property if base is same then power will be added. I can write this in this form also. Now since x1 and x2 both are independent variables, so I can separate this expectation e की t x1 into expectation of e की t x2. So it will be mx1t and it will be mx2t. mx1t की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 1 माइनस t की लैम्डा 1. mx2t की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 1 माइनस t लैम्डा 2. तो 1 अपॉन में 1 माइनस t लैम्डा 1 c इंटू 1 माइनस t लैम्डा 2. ये है. Since it is in multiplication and base is same, तो base is same then power will be added, so it will be 1 upon में 1 minus t lambda 1 plus lambda 2. तो I can say कि sum of two gamma variate is again a gamma variate with parameter क्या होगा इस केस में lambda 1 plus lambda 2 with this parameter. Done. So you can generalize this result for n independent variates also, like for n independent variate x1 plus x2 up to so on xn. This will be gamma variate with parameter lambda 1 plus lambda 2 up to so on lambda n. All right.